हेलो नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का थिंक बियॉन्ड नॉइज में स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू योर पॉलिटी अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट. This act actually came into force from yesterday, that is the 4 August 2022. So let's see why it is in the news, why this video about related to this news, why this news in the current affairs, because this the whole act name पूरा नाम है that is the Criminal Procedure Identification Act 2022. This is the amendment act. We will see which was passed in the parliament in the April this year, means April 2022 parliament. They are already passed in the Lok Sabha and also in the Rajya Sabha, but it came into force, लागू हो रहा 4 अगस्त 2022 से. Clear? So in this video we will see, and very important for your examination, civil service and any state civil service, any examination, very important, that is the what is the Criminal Procedure Identification Act. Actually यह एक्ट है क्या, and what is the objective, इसका उद्देश्य क्या है इस एक्ट का, and how is it different from the colonial era law. Earlier I told you because this is the Amendment Act. So what is the earlier which is called the colonial era, means अंग्रेजों के समय एक्ट लागू हुआ था, that is how it is different, या उससे अलग कैसे है. And what about the in the act regarding the storing of data, इस डाटा को स्टोर करने का इस एक्ट में क्या कहा गया है, we will see, and why criticism and fear by the opposition and also the some intellectual also regarding this act, we will see in this video. Clear? Okay. Now what is the Criminal Procedure Identification Act 2021? See that this act is a main argument, this act is allow the police, या पुलिस को allow करता है. See here, 3 things you should know: फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सैंपल को एनालिसिस करने का यह पुलिस को अलाउ करता है. मीन्स इट अलाउ द पुलिस टू फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड द बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स. तो हियर we will see that what is the physical, what is the biological and what is the behavioral attributes. Physical, in the physical that is the finger impression, fingerprint, palm impression, palm print, footprint, photograph, iris and retina scan also are included in the physical samples. Clear? Then the biological sample, that is the blood, that is the urine, tissue, cell, saliva used in the corona, you know very well, saliva and many others regarded to the biological sample. Behavioral, as for example the signature, handwriting and any other examination which are referred to the section 53 and section 53A of the Code of the Criminal Procedure 1973. This is the main act. Gist of this act we can see, means it is the empower the police officer to collect these samples of the criminals. Clear? Physical, biological and behavioral. Physical means finger impression, palm print impression, footprint, photographed iris, retina. Clear? Biological means blood, urine, that is the tissue, uttak, cell and also the saliva. Behavioral, that is collected, all are empower or are sample collected, the given to the empower the police officer to collected these all samples by the for the criminal, from the criminal. Clear? This is the what is the Criminal Procedure Identification Act 2022. Again we will see that what is the objective of this bill. This is the objective of this bill to ensure the unique identification, ensure the identification. Actually it is not a bill right now, it is a act because president साहब इसको एक्सेंट दे दिए, साइन कर दिए, so it's right now become the act, not bill.
So ensure the unique identification, because every person have the unique identification and every person have a uniqueness, that is the unique signature, unique blood, unique saliva, unique DNA. So unique identification means if any criminal that is in the criminal in nature, the unique identification data of the unique identification is stored in the government. क्यों? बिकॉज दिस हेल्प इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू सॉल्व केसेस. इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट इज द पुलिस, रॉ एंड अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिलेटेड टू सॉल्व दिस केसेस. इफ दिस डाटा आर स्टोर्ड एंड ऑल्सो द to this agency, then it will help to investigate the criminal and solve the cases. Clear? नेक्स्ट इज द हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम द कॉलोनियल एरा लॉ. यह कैसे अलग है जो हमारे ब्रिटिश राज का जो लॉ था उससे अलग. ब्रिटिश राज का जो लॉ था जिसको अमेंडमेंट किया गया, दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट. रिमेंबर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट जो कि 1920 में लागू हुआ था. Means the new law replaced the colonial era legislation called the Identification of the Prisoner Act, which date back to 1920. And this act only allowed to police collect the fingerprint and footprint impression, only physical. But right now it expanded to what? Biological and also the behavioral and also the limit category of the convicted person. Not all type of the criminal, but right now this new criminal amendment act allow to all type of the criminal. Range of the collected the range of biological identity to not only convict but those arrested even detained any preventive detention law. किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अगर वह लागू मीन्स आतंकवादी टाइप आदमी, तो वह यह लॉ या पुलिस को इम्पावर करता है. नॉट इवन फिजिकल, बिहेवियरल एंड ऑल्सो द बायोलॉजिकल सैंपल. क्लियर? and the old law only the limited to serious offender, but this law all category of the criminal and accused. This is the main we can say here the difference between the previous, that is 1920, the Identification of the Prisoner Act and also the new Amendment Act. Clear? Now the what about the storing of data? See, यह empowered to the NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो क्रिमिनल का डाटा स्टोर करता है, यह इम्पावर करता है एक्ट जो यह डाटा को स्टोर करे, जो कि एनसीआरबी कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. पीटी में पूछ सकता है एनसीआरबी कम अंडर द विच मिनिस्ट्री, सो यू शुड नो दैट इज द एनसीआरबी ओनली कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो यह स्टोर कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, रख सकता है, शेयरिंग टू द अदर एजेंसी, डिसेमिनेशन, डिस्ट्रक्शन आल्सो, या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, एंड डिस्पोजल ऑफ द रिकॉर्ड विल बी डन बाय द एनसीआरबी. मीन्स एनसीआरबी इस डाटा को स्टोर करेगा विच इज इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इसको स्टोर करेगा, प्रिजर्व करेगा, शेयर करेगा, डिसेमिनेट करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा एंड ऑल्सो द डिस्पोज करेगा. Clear? Means here NCRB collect all crime data that will record measurement the state government union territory on any law enforcement agency store, preserve, destroy the record measurement of national level, process such record are relevant crime and criminal record. क्लियर? एंड यू नो वेरी वेल, यह रिकॉर्ड जो है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, जो कम से कम फॉर 75 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सच मेजरमेंट. मीन्स 75 साल तक एनसीआरबी इस डाटा को स्टोर कर सकती है. क्लियर? नेक्स्ट, दैट वाई क्रिटिसिज्म एंड द फियर. ये क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा? सी, शार्प क्रिटिसिज्म इट इन्वॉल्व द इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड द लिबर्टी, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस सम प्राइवेसी एंड सम लिबर्टी दैट वायलेट बाय दिस लॉ. So the sharp criticism regarding the individual, because individual का प्राइवेसी क्या होता है? उसका फिजिकल सैंपल होता है, उसका फिजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, बिहेवियरल होता है, या आप स्टोर कर रहे हैं
So the fear that violate this, and maybe this is misused by the other agency also, misused by the government also. So this is the clear, and also it will be unbridled power to the state and executive machinery. पुलिस को दिया जा रहा, तो स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव मशीनरी को यह एक बहुत बड़ा पावर दिया जा रहा है रिगार्डिंग टू सैम्पलिंग ऑल दिस थिंग्स, एंड यह नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग को भी बढ़ावा दे सकता है, जो कि बाय द सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट अलाउड टू द एनी इंडिविजुअल टू गो अंडर द नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग. क्लियर? सो दीज आर ऑल अबाउट द व्हाट वी कॉल्ड हियर the Criminal Procedure Amendment Act. Clear? The questions may be asked regarding the how it is different from this, how it is different from the colonial era, and question may be asked the main point, what is the objective main point of this, highlight this law in the mains, that is the subjective type, and maybe objective type question asked from this question. So be prepared. Clear? So this is all about this act which is pertaining to your polity. Okay, thank you and have a good night. Okay.